interlocking arrangement to avoid human error. You understand it? जैसे आइसोलेटर का इंटरलॉकिंग होती है, मैनुअल मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है. Are you understanding? No. No. Interlocking, isolator. Manual, what is that? Manual interlocking. Interlocking. There is some question on the interlocking that is the first point in this current slide. Are you able to see it? Interlocking. Yes, sir. You see, interlocking can be of two types. One is a mechanical interlock, another is electrical interlock. Mechanical interlock, it is possible only within the same equipment itself, like isolator and arc switch. If it is in the same structure, same base, you can have it. So, what is that interlock? If isolator is closed, you cannot operate arc switch. If arc switch is closed, you cannot operate isolator. This is the mechanical part. Mechanical part you can very well accomplish if it is the same structure, same equipment. But electrical, it is the more predominant thing. Electrical. This is mechanical, whatever is there. Apart from that, the interlocking between isolator and arc switch is also ensured electrically, apart from mechanical. Okay, am I clear to you? So what is the difference between them? It is a mechanical, it's a lever arrangement. You cannot operate. When arc switch is on, you cannot operate isolator. It is a lever arrangement, mechanical arrangement. And electrical, there are interlock coils are there. In the isolator also, in the arc switch also. So when arc switch is closed, you cannot operate operating coil of the isolator. When isolator is closed, then you cannot operate your arc switch. This is the electrical interlock. उसमें मतलब कोई लीवर वगैरह अरेंजमेंट नहीं होता. ना, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक में कोई लीवर का अरेंजमेंट नहीं है, वो मैकेनिकल इंटरलॉक में है. लीवर तो मैकेनिकल डिवाइस हो गया ना. चेंज ओवर. हाँ, इलेक्ट्रिकल होता है कॉइल और वो सब ये रिले फिले वो सब जो उसका थ्रू जो इंटरलॉक होती है वो वाला का ये होता है इलेक्ट्रिकल. समझे ना? इसमें कंट्रोल वोल्टेज वो सब डीसी एसी वो सब देखिए उसको ये होता है. Am I clear to you or not? Mechanical and electrical interlock, what is the difference? Okay. Yes. ये तो isolator and arc switch. This is the basic thing. Then, suppose you want to operate circuit breaker and isolator. Then what is the logic? When breaker is closed, either you can operate isolator, nor you can operate arc switch in the respective in the same circuit. Am I clear to you? Yes. When breaker is closed, you cannot operate any isolator. It's associated isolator and associated arc switch. Breaker is closed. So when breaker is open, then only you should be able to. Why it is like this? Can you draw some light? Because isolator do not have any arc quenching device. Suppose you have to close the isolator, and now you are opening the close the breaker, and you are that means the circuit is on, voltage is there. You are opening the isolator. That means there will be huge arc, and isolator house will get burned. So that is the reason. When breaker is closed, you cannot operate your isolator and arc switch. Am I clear? Then, suppose you want to operate circuit breaker from local. You cannot operate your circuit breaker from local until and unless both sides of switches of the circuit breaker is closed. Am I clear? Circuit breaker, both sides you have got.
isolators. And all the isolators, both the isolators are having arc switches towards the breaker side. That means those arc switches must be closed if you want to close the circuit breaker, if you want to operate the isolator as a circuit breaker. This is the requirement. Am I clear? Because breakers are having grading capacitors and all. They can have trap charges. Now you operate it. So it is dangerous. So first you close the local arc switches, then you operate the circuit breaker. Otherwise you cannot. From local. Remote, okay. Remote, you don't need to have these arc switches closed. But local, if you want to do, then these arc switches must be. Because you have to be doubly sure when you are closing the circuit, operating the circuit breaker from local, there is no voltage at either end of the circuit breaker. Am I clear? There should not be any voltage. Suppose you want to check whether the line is, suppose the line is charged. Under the charge condition, you want to close your isolators. You can have an interlock like this. Normally what do you do? You close the isolator, ask that man, remote it, you charge the line, so that you don't need to operate your isolator under charge condition. Are you getting my point? You want to handle isolator in a charge condition. You want to avoid it. Yes. Okay. This is the betterment of it. Or you don't want to open it when the line is charge condition. Here is an interval. What is that? Line CBD is there. Suppose voltage is there. There is a low voltage relay. That relay senses there is no voltage in the line, and it gives permissive to this isolator. There is no voltage in the circuit, then it gives permissive for closing of the isolators, operation of the isolator. Am I clear? Huh? Then circuit breaker I have said, isolator, interlock I have said. Then it is the main thing. Breaker, isolator, interlock, bus isolator, then bus isolator, line isolator, then figure side, all this transformer. So you have to keep in mind. So there is a logic. Whatever has been designed is meeting your operational requirement or not. Because आपने दे दिया, देने के बाद इसका बाद चेक कर दिया, बस ठीक है. बट आपका मिशन तो कर दिया, बाद में देखा जाएगा जो आपका ऑपरेशनल लीड आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो यू मस्ट एंश्योर दैट योर ऑपरेशनल नीड इज प्रॉपरली ऑपरेशनल सेफ्टी बोला ना, सेफ्टी रिक्वायरमेंट मस्ट बी एंश्योर्ड थ्रू दिस. क्या सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर टेस्टिंग करनी पड़ती है इसकी थोड़ा टाइम में? किसका? सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर और स्विच की टेस्टिंग करनी पड़ती है थोड़ा टाइम में, जैसे फॉल्ट नहीं हुआ कोई तो पावर अगर फॉल्ट कोई नहीं हुआ लाइन में, हाँ, तो उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है हमें थोड़ा टाइम में कि वर्किंग प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं. आपने बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा है, ये सर्किट ब्रेकर वाले को जवाब देना चाहिए. हम तो प्रोटेक्शन बोलने आया हूँ, तो इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा. लेकिन हम जब पूरा कंट्री में जब हम पावर ग्रिड का जो ऑपरेशनल ये में जब ये था, तो मेरा एक कहानी ये था, मेरा अनवांटेड चीज नहीं करना है. आप समझ गया ना? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था एंड आई हैव एनफोर्स्ड इट. अगेन इफ आई हैव सीन, मतलब कोई भी मेंटेनेंस करना है, ये है एक जगह में है मेंटेनेंस का एक जो स्लाइड है ना, उसमें हमने लिखा हूँ में ऑपरेशनल हिस्ट्री आपको देखना है. आपने क्वेश्चन पहले ही कर दिया, वो वाला मेंटेनेंस स्लाइड पे है हमारा. उसमें क्या किया मैंने, उसमें लिखा हूँ कोई भी मेंटेनेंस करने जाना है उसका पहले ऑपरेशनल हिस्ट्री देखना है.
ऑपरेशनल हिस्ट्री मालूम है, समझ में आ रहा है क्या टर्मिनोलॉजी से? ये जिस पीरियड जितना दिन वो सर्विस में रहा है, इसने क्या क्या उल्टा सीधा किया है, हरकत किया है, वो आपको देखना है। इसके बाद अब शटडाउन हो, ऐसा नहीं है जो आपने फट से शटडाउन ले लिया, इसके बाद आपको पता नहीं है, इसके बाद आप पूरा लॉग शीट देख रहा हो, ये देख रहा हो, ये हिस्ट्री रजिस्टर देख रहा हो। हमारा वहाँ पे हिस्ट्री रजिस्टर हुआ करता था, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी होगा ना उसमें रिकॉर्ड होता था, ऑपरेशन शीट में वाला रिकॉर्ड। अगर नहीं रिकॉर्ड होता तो हम लोगों ने उसको देखा था, राइट इसमें रिकॉर्डेड नहीं है कि जब वो मेंटेनेंस हो जाएगा वो हिस्ट्री रजिस्टर होता था, खोल के देखेगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ हुआ है पीरियड में, वो जाके वो मेंटेनेंस। अभी आपने बोला है ना, देखना है क्या? मैं क्या करता था, फॉल्ट करंट देता था, देखा तो फॉल्ट करंट ये किया है ना, देखा तो आपको लाइन में फॉल्ट है, आप उसमें लाइन लगा दिया, इमीडिएटली ठीक हो गया। उस टाइम करंट कितना हुआ आपने देखा, माने मेकिंग करंट जिसको बोलता है, मेकिंग करंट यू नो होता है ना, मेकिंग करंट तो कॉलेज में पढ़ के आए हो, निकलते वो करंट देखता था। इफ द करंट इज abnormally high, not 40 kilo, but quite high. Suppose 20 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 15 kilo, like that. Then we used to do dynamic contact resistance measurement. Are you getting me or not? There is a system right from the beginning. Normally, contact resistance will be there. Contact resistance, you understand? When breaker contact is closed, then contact resistance will be there. So that gives you the idea what is the bonding. What is the bonding between the fixed contact and moving contact. But there is another test which came out in a later date, that it is an evolving situation. The dynamic contact resistance, that arcing contact and all those things of the profile will come. To see that there is any erosion in the contact of rod because of that high current. If it breaks a high current, then you need to go for this dynamic contact resistance. And then another thing, because medium is SF6, so एक बार उसका SF6 गैस का उसका प्योरिटी एक बार मिल जाता है, बिकॉज वो हाई करंट में जो एनर्जी डिसिपेट हुआ है उसमें SF6 का क्वालिटी तो डिटोरेट नहीं कर दिया। आप समझ गए ना बात है? Are you getting me? You are not getting. Media is SF6 gas. It's a circuit breaker. He is asking, लाइन फॉल्ट हो गया, लाइन ट्रिप हो गया, तो आपको क्या ब्रेकर का सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा? तो हम ऐसा रेगुलर बेसिस में करते नहीं। If it breaks, if it interrupts very high current, then dynamic contact resistance and SF6 purity. The gas quality is intact. There is no question. Maximum these two things. If somebody feels, he can do it. If he does not do it, it doesn't matter also. But if you want to be very conservative, you can do this much. That's all, and nothing else. And if it has not operated, then you have to have a total operational check of this. Okay. Next. This interlocking arrangement you have understood. Second point. Any question? Any question on this slide? Guys online. Do you have any question on this particular slide? Are you listening? Yes, okay. Any question on this particular slide? Otherwise, I will switch to some next slide. I told you. Last point. Yes, directional ground fault. I was telling you, it is that. It was added subsequently. It was added because high resistance fault. Normally, this distance relay are not able to detect for this, complemented by directional ground fault protection for high resistive faults. This is the latest addition. Directional. आप पावर मेजरमेंट करते हो, एनर्जी मेजरमेंट करते हो, एनर्जी किलोवाट आवर करते हो,
किलोवाट मेगावाट भी करते हो, उसमें वोल्टेज और करंट भी देते हो, वाट मीटर फंक्शन होती है ना, वो तो वाट मीटर फंक्शन ही बोलते हो ना। इट इज द सेम प्रिंसिपल हियर। In the electromagnetic relays, it is the same voltage current. It is the watt meter. Okay. Forward power, reverse power, all those things. उल्टा कर दो तो reverse power हो जाएगा, लाइन की तरफ तो लाइन की तरफ पावर फ्लो हो रहा है, एक मेजर कर रहा, तो एनर्जी एक्सपोर्ट करते हो ना, watt meter instrument, it is the same. But normally there you get sequence voltage. 100 to 100. Here it is given open data voltage. What is open data voltage? Open data मतलब डेल्टा जो वाइंडिंग है उसका 57.7% वही वाला ट्रांसफार्मर। हाँ ना, थोड़ा सा काटा नजदीक गए हो तो इसको एक लीड उसका टूटा हुआ रहता है। हाँ, एक लीड उसका टूटा हुआ रहता है। टूटा नहीं होता है, वो ओपन करके रखते हो। ओपन क्या करते हैं? वीवी कनेक्शन बोलता है उसको। वी वी वीवी कनेक्शन। वी भी नहीं बोलते, वी तो होता है दोनों फेस का ही है। हाँ, ओपन डेल्टा कनेक्शन।